The edge length of unit cell of a metal having molecular weight 75 gram per mole is 5 angstrom, which crystallizes in a cubic lattice, and its density is given as 2 gram per cc. Then we are asked to find out the radius of metal atom. So Avogadro number is given and they are asked the answer in picometer. ये सवाल न्यूमेरिकल आंसर टाइप का है एंड इसका आंसर है 216.5 पिकोमीटर. सो लेट अस सी द डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग गिवन डेटा देखते हैं. सो हमें क्वेश्चन में दिया है एड्ज लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉम, मोलार मास ऑफ द क्रिस्टल इज 75 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दिया है 2 ग्राम पर सीसी एंड हमें बोला है इट क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस. वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ मेटल एटम. सो लेट इट बी आर. सो पहला इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी समझते हैं. क्वेश्चन में हमें एड्ज लेंथ दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, डेंसिटी दिया है, उससे हम लोग टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट डेंसिटी D is equal to Z into m by a cube into Avogadro's number, where D is the density, Z is the number of atoms per unit cell, m is the molar mass and a is the edge length and Na is the Avogadro's number. तो हमें डेंसिटी मालूम है, m मालूम है, a मालूम है and Avogadro number तो कांस्टेंट है. Then from this data we can calculate Z. Okay, if the value of Z is comes out to be 1, then that unit cell will be simple cubic. If the value of Z is comes out to be 2, then that will be the body centered cubic unit cell, and if it is comes out to be 4, it will be FCC, that is face centered cubic unit cell. For each type of the unit cell, there is a relationship between edge length and radius of atom. So we will first find the type of unit cell and then from this data we will calculate the radius of metal atom. This is the strategy for this question, students. Okay, so चलो अभी हम लोग पहले Z का वैल्यू निकालते हैं. So फॉर्मूला है D is equal to Z into m upon a cube into Na. So we can write Z is equal to density into a cube into Avogadro's number divided by m. Correct. So density दिया है 2 gram per centimeter cube. So 2 gram per centimeter cube, right, into A कितना है, एमस्ट्रॉन्ग, 5 एमस्ट्रॉन्ग. तो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू द सेंटीमीटर. सो वी नो दैट 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 raised to minus 8 centimeters. Clear? So we can write here edge length is equal to 5 into 10 raised to minus 8 centimeters. बराबर ना. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 into 10 raised to minus 8 the whole cube and इसका यूनिट्स रहेगा सेंटीमीटर क्यूब. Okay, Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23 and इसका यूनिट्स है पर मोल, डिवाइडेड बाय मोलार मास दिया है 75 ग्राम्स पर मोल. तो ये पर मोल कैंसिल. करेक्ट. ये सेंटीमीटर क्यूब गेट्स कैंसिल्ड and grams gets cancelled. So Z is the number of atoms, so it's a number, so it is not having any units. So upon solving this we get Z is equal to 2 and this corresponds to body centered cubic unit cell. And for body centered cubic unit cell we can write the relationship between A and R. So we know that A is equals to 4 upon root 3 R. So from this data we can write R is equals to root 3A upon 4. A है 5 angstrom and root 3 by 4. This comes out to be 2.165 angstrom. Now let's have a relationship between angstrom and picometer. 1 angstrom is 100 picometer. So we can have 216.5 picometer. Okay, that's our answer. So that's it. Thank you very much students for listening. If you like our efforts, please like the video, share it with your friends and subscribe to our channel. मिलते हैं अगली वीडियो में.